Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Yeah, good morning once again, all of you. Good morning, sir. शुभम गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में तो हम लोग वो लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, tuple, and we discuss about the how to take input from the user and while loop, for loop, etc. Okay. Today we want to discuss about another important features of Python, that is NumPy. Or anyone any doubts about previous session classes? No doubts. Okay. Today we want to discuss about NumPy. NumPy is a very important module. NumPy provides us different built-in functions related with mathematical calculation and related with number analysis. Using NumPy built-in functions, we are working with multi-dimensional array also. तो NumPy क्या प्रोवाइड करता है? NumPy मॉड्यूल एक मॉड्यूल है, NumPy. From the name, all of you can guess it. It will provide us different features, different built-in functions. Using these functions, most of the time, we are working with numbers. Let's see. And it is very important for data analysis and machine learning also. Maybe all the things are important. What is NumPy? NumPy's main object is the homogeneous multidimensional array. Main object. We can create a heterogeneous multidimensional array using NumPy also. Heterogeneous means it is an array. So we can store different data type values. एक array है जिसमें different data type values store कर सकते हैं. Integer, string, number, float. But why we use NumPy? Main objective is कि homogeneous multidimensional array. When we are working with same type data, collection of same type data, most of the cases we use NumPy.
It is a table of elements, usually numbers. It is a table of elements. What is table? Table is a collection of rows and columns, all of the same type and indexed by a tuple of positive integers. ये collection है, usually numbers in any number, maybe integer, maybe float. Usually we store collection of numbers. All are same type most of the cases. And when we store the values in NumPy, always all the values are indexed. हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होगा. What is index? Index is a tuple of positive integers. I think all of you, अब सब लोगों का एक आइडिया है कि what is tuple? Read only collection of values. In NumPy, dimensions are called axes. हर एक NumPy का एक dimension होगा, 2 dimension, maybe 3 rows, 4 column, 3 by 4, 3 dimensional, 3 rows, 4 columns, and maybe 2 z-axis value. तो हर एक NumPy array का एक dimension होगा. For example, the coordinates of a point in 3D space. आप लोगों का एक आइडिया है कि 2D space मतलब like this. Just wait. Means if we represent a data point using x-axis, graph सबको आता है. That is our x-axis. This is our y-axis. Okay. Maybe there is a data point. There is a point. Orange colored circle. This is x-axis. This is y-axis maybe. How to represent this point? This ये जो point है, इसका क्या है? इसका एक x value है. X value maybe 1, 2. Y value maybe 2. तो ये जो data point represent कर रहा हूँ, कहाँ represent कर रहा हूँ? देखो एक 2 dimensional space है. ये इस एक data point है, जिसका x axis value है कुछ, y axis value है. In the same way, जब कोई 3 dimensional space में हम लोग कुछ data point represent करें, 3 dimensional space मतलब कैसे होगा? Obviously इसमें और एक axis होगा, that is z axis maybe. It is not be possible to represent over here 3 dimensional z axis. तो ये जो डेटा पॉइंट होगा x y z होगा, तो z एक्सिस का भी कुछ वैल्यू होगा, मे बी z एक्सिस होगा. 3 डायमेंशनल स्पेस में ये डेटा पॉइंट होगा, तो मे बी represent the data point using x axis value, y axis value and z axis value, isn't it? तो यहाँ पीपीटी में जो लिखे हैं देखो, फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस, 3D स्पेस में एक डेटा पॉइंट, एक पॉइंट है, तो उसका एक्सिस क्या होगा? स्पेलिंग देखो, AXIS, one axis. That axis has 3 elements, x, y, z value. So we say it has a length of 3. तो इसका लेंथ क्या है? 3. In the example picture below, जैसा ये जो think about the list of list, ये लिस्ट का स्टार्टिंग है, ये लिस्ट का एंडिंग है, और ये लिस्ट में देखो कितना डेटा पॉइंट्स है? 2 डेटा पॉइंट्स. तो मतलब एक्सिस कितना है? 2 axis, 2 axis. Because this list of list, I think all of you have an idea what is the meaning of list of lists. तो ये जो list of list है, इसमें देखो कितना डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2. तो axis equal to 2 and every axis has 3 elements, देखो x value, y value and z value. तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 2 by 3. और in the other way,
ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, देखो यहाँ 2 रोज, हर एक रो में कितना कॉलम है, 3 कॉलम्स है. So what is the dimension of this list of list? That is 2 by 3. In the same way, if we create list of lists, obviously वो क्या होगा, 3 dimensional space होगा. So all ND array means n means n, d means dimensional, n dimensional array are homogeneous. And when we are working with n dimensional array, dimension may be anything, 2 dimension, 3 dimension, 4, 5, n dimension. Every item takes up the same size block of memory. I think all of you know that in case of array, every element stored using same size block of memory, and all blocks are interpreted in exactly the same way. How each item in the array is to be interpreted is specified by a separate data type object, one of which is associated with every array. In addition to basic types, integer, float, the data types object can also represent data structure. एक्चुअली NumPy array में हम लोग क्या करें, NumPy array में हम लोग ऐसा बहुत सारा वैल्यू स्टोर करें. तो जितना सारा वैल्यू स्टोर करेंगे, हर एक वैल्यू क्या करेगा, सेम साइज ब्लॉक ऑफ हर एक एलिमेंट इन NumPy array होमोजेनियस, तो सेम साइज ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज करेगा. और उसमें क्या स्टोर करेंगे, आइदर इंटीजर, आइदर फ्लोट, एनी डेटा टाइप वैल्यूज. NumPy's array class is called ND array. एक्चुअली जो पाइथन हम लोगों को जो NumPy प्रोवाइड कर रहा है, NumPy कैसे डिफाइंड है, एज ए क्लास डिफाइंड है. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, बिकॉज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. लेटर वी डिस्कस अबाउट द क्लास ऑब्जेक्ट. तो ND आप लोगों का तो एक आइडिया भी है कि जितना सारा डेटा टाइप है, हर एक डेटा टाइप एज ए क्लास प्री डिफाइंड है. इन द सेम वे NumPy array कैसे डिफाइंड है पाइथन में, एज ए क्लास नेम इज ND array. It is also known by the alias array. Note that NumPy.array is not same as the standard Python library class array.array. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग array एग्जांपल प्रैक्टिस किए थे. सिंगल डायमेंशनल array जब क्रिएट किए थे array.array मेथड. तो array.array मेथड जो है और NDArray.array जो NDArray एक क्लास है, इसमें भी array मेथड है. Both are not same. Array.array which only handles one-dimensional arrays and offer less functionality, but NDArray.array function provides us more functionality than the array.array function. तो मतलब क्या हुआ, देखो जैसा प्रीवियस क्लास में array.array फंक्शन हम लोग यूज किए थे, NDArray एक क्लास है, इसमें बहुत सारा मेथड्स है, इसमें भी एक array मेथड है which is important. How to create a way to create the array in Python, two way. एक है कि NumPy array method और एक है कि array module में array method. तो array method, array.array method और NumPy.array is not same, but the two functions are different. An array.array method offers less functionality than the NumPy array method. Let's see how to create a NumPy array using NumPy.array method. When we are working with NumPy, at that time we have to include a NumPy module in our program. And when we use any built-in functions which are available in NumPy module,
how to access the functions? Every time we have to call the function with the name of numpy. कि numpy.array, numpy.arange. ऐसा बहुत सारा फंक्शन प्रीडिफाइंड है. एवरी टाइम क्या लिखना चाहिए? numpy dot. Otherwise, you give an alias name to this module. Alias name means the nickname. जब कॉल करेंगे हर टाइम कैसे कॉल करना है? numpy.function name in this way. और एक वे है कि इसका एक alias name दे देंगे. Alias name मतलब like a nickname. You can give any alias name over here. Like import numpy as np, मतलब numpy को import कर रहा हूँ using the name np. उसके बाद देखो ये alias name यूज करके इजीली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. बार बार ऐसा numpy dot लिखने का जरूरी नहीं. जैसा में भी k equal to there is a I think all of you know that the comma separated values enclosed within open and close square bracket. Now from the list we want to generate a numpy. How to do that? देखो maybe k1 is a variable. Then what we write? Alias name dot. Just that. Alias name np dot. क्या function use कर रहा हूँ? Array function. Not array.array function, that is numpy array function. और क्या कर रहा हूँ? We want to create a numpy array using a list k. Okay. Now let's see. Print k1. Now save the program in anywhere in your hard disk. Maybe in the desktop. CIT. Today's date 3/2/2021. numpy underscore example1. Now if we execute the program, check the output. So what is this? It is the numpy array. What is the difference between list and numpy array? Because there is no comma separator over here. Otherwise, you can check this. देखो k, what is k1? k1 क्या है? एक numpy array है. If you check the data type of the variable k1 का data type क्या है? I think all of you know that print data type of var k1. There is a built-in function type k1 जिसमें list of value stored है. उसका data type क्या है? numpy.nd array type, not numpy type. Nitish, don't say कि numpy type. nd array type, numpy.nd array type, because numpy array defined as a class nd array in the numpy module. So it will display like this: class numpy.nd array. Numpy is a module name, nd array is a class name. That is the data type of the variable k1. But if we want to know the data type of every element, nd means n dimensional. Nitesh, nd means n dimensional. N मतलब any dimensional, n equal to maybe 1, n equal to maybe 2, ऐसा. d मतलब dimension. अच्छा, if we want to, देखो in this way we check the data type of the variable k1. लेकिन k1 में जितना सारा एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स देखो इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है. हाउ टू नो द डेटा टाइप ऑफ एवरी एलिमेंट इन द numpy array?
So NumPy provides us different attribute also, like data type of every element in Q1. How to check it? There is a built-in attribute, not function, attribute. What is this? देखो Q1 is the name of the NumPy array, variable name, dot d type, not type function. If we want to check what is the data type of every element available in the NumPy array, if we execute this, check the last output. What is the last output? The data type of every element in Q1 integer 32. Actually 32-bit integer value. That is the name of the data type. We actually int 32, int 64. Don't think that all the data types are different. Actually, it will based on the range of the value. 32-bit range value, 64-bit range value. So how to check the data type of every element in the NumPy array? Using attribute. Now if you want to check the shape of K1. To check the shape of the NumPy array, there is also another attribute already predefined. All the things are जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ है मेरा पीपीटी में. हाँ, मैं पीपीटी शेयर करेंगे, डोंट वरी. K1 dot there is an attribute shape to check the shape of the NumPy array. Now if we execute this, K1. That is a mistake. What is this? It will represent the shape in this way. Only the 5 comma. What is the meaning of this? Actually, this is a single dimensional NumPy array. How many elements are there? Dekho 5. That's why it will represent the shape in this way. Maybe there is later we discuss about it. It will represent the same single dimensional 5 elements. If it is 2-dimensional, means number of rows and number of columns, means maybe 5 comma 3, means 5 rows 3 columns. Later we are working with 2-dimensional NumPy array also. Now if we want to check the dimension, how to check dimension of NumPy array? कैसे check करेंगे? Dimension of K1 dot देखो ndim. Remember this, ndim is the attribute. Now if we execute the program, let's check that what is this. The dimension is 1, means single dimensional NumPy array. So using array function, we create a NumPy array from list also, from tuple also, from set also. Remember one thing, student, in case of NumPy array, if the list, tuple or set is single dimensional, then it will create a single dimensional array, single dimensional NumPy array. But if the list is like this, maybe m equal to 1, 2, 3, maybe 4, 5, 6. What is this? This is the list of lists. From that list,
if we generate a numpy array, maybe m1 equal to np dot array, we create a numpy array from the list of lists m. Now check the dimension of m1 or shape of n1. Print shape of m1. What is the attribute name? m1 m1 dot shape. Now execute the program and check the output. What is the shape of m1? When it is a list of lists, think that, realize this. How many elements in the list m? There are 1 and 2, like 2 rows. And how many elements in every list? There are 1, 2, 3, 1, 2, 3. So what is the shape of this numpy array? 2 by 3. So if we create a numpy array from list of list, at that time it will create two-dimensional numpy array. If we create a numpy array from list of list, then three-dimensional in this way. If you check the dimension, print dimension of m1. If we write m1 dot ndim, now check the dimension of the m1 numpy array, that is two-dimensional numpy array. If we print, another way to check the elements in the m1 numpy array, there is a variable explorer. All the variable names are displayed over here. If this is variable explorer, it is not available in Jupyter notebook or PyCharm, but in case of Spider, that is our m1 variable. If you double click on that, what is this? We create a numpy array from this list. That's why it will display the elements like that, two-dimensional numpy array. 2 rows 3 columns. और यहाँ जो 0 1 प्रोवाइड कर रहा है ये इंडेक्स है, रोज इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स. By default, rows index and column indexes are a tuple. Got it? Obviously, you can check it by printing the values of m1. And here also it will display size is this, data type of every element in this numpy array. From the variable explorer, you can check it. That is the advantage of Spider. So in this way, using array function, we create a numpy array. Now let's see. We create numpy array, comma, d type equal to float. We change the data type of every element in the numpy array. At that time, what is happening over here? Let's see. We execute the program. Now check the m1. It will not display over here. In this way, you can check it. Maybe for segregating the output, I give the print statement over here. Okay. Now print m1. If we print the values, it will display like that. 1 dot, 2 dot. But if we are not provide this data type over here, now print this and check the output. The values are 1, 2, 3, 4, 5, 6. But if we forcefully change the data type of every element of the numpy using this d type, data type of every element is numpy array, if float, at that time it will display the elements like that. Means 1.02, 0 is not displayed over here, but all the elements are floating type data. Obviously, you can check it in this way also. So,
based on our requirement, we create numpy array with integer element also, with a floating point element also, data type of every element in M1. I think all of you know that. What is the attribute? M1 dot D type. Even check the output. The float 64, but previously it was in 32. So we can pass the data type over here at the time of NumPy array creation. Everyone got it? Anyone, any doubts? Now, dimension and the array. Okay. Now, check that. A equal to maybe these are the elements. This is not required for you guys, but some people, those who are working with mathematics only, some mathematician also working with mathematics, at that time they want to write some program. I think all of you know that in mathematics there is a number, complex type number. Every complex number जितना सारा complex number है, सबका एक real part है. There is a real part and imaginary part. In Boolean algebra, I think all of you know that. Now, if we create an numpy a1 equal to np dot array, we want to create a numpy array using the list elements of a, and here we pass the data type forcefully. Data type equal to complex. This is not required for real life machine learning program, but you have to know that. If we write this, if we create the numpy array in this way, then we print, maybe I print this to segregate the output. No need to write this. Print A1. Check the output. What is this? All the elements are the complex type. 1.1 plus 0.j, real part, imaginary part. 2 plus 0.j, every element is a complex number type. तो देखो मैथमेटिक्स में जो लोग काम करता है उसके लिए भी फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है NumPy. In the same way, if we think about the NumPy operations, let's see, we create. अच्छा, इतना तक सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? Anyone, any doubts, any question? अच्छा, आशुतोष K1. हाँ, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? Anyone, any question? Okay. Next. Okay, thank you, आशिता. सबको समझ में आया? सबाई बुझते पाরছিস তো রে? नाले बोल भी है. I think all of you know that this is online training. That's why every time you have to raise your question if anyone have any problem. Now, if we think about the NumPy operations, in case of NumPy, every arithmetic operations executed element wise. मतलब जो NumPy में कोई भी arithmetic operation execute करेंगे तो क्या करेगा? Element wise execution होगा. जैसा में भी A equal to, अच्छा, import NumPy as NP. Now we create a NumPy array. A equal to NP dot array 1, 2, 3, 4. Okay.
This is a NumPy array. If we print A, save this program, NumPy operations example. If we execute the program, oh, there is a mistake. If we execute this program, what is the NumPy over here? NumPy is like that. This is a NumPy. Now, if we write print print A plus, maybe you write in this way, A1 equal to A plus 5. Then print A1. What is the output over here? A plus 5 means it will execute the operation element wise. जो A NumPy array है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? देखो 1 2 3 4. जब A plus 5 करके A1 में स्टोर कर रहा हूं तो कैसे एग्जीक्यूट किया? देखो 1 plus 5 6, 2 plus 5 7, 3 plus 5 8, 4 plus 5 9. कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, पावर, मॉड्यूलस, division, okay, even comparison operator also. If you write A less than greater than 5, not greater than 5, maybe we write greater than 3. So A greater than 3 means execute this operation element wise, and now maybe that is A2, but it will not affect the actual NumPy array. Now check the output. The 1 2, what are the elements in the NumPy array? A 1 2 3 4. The 1 greater than 3 false, 2 greater than 3 false, 3 greater than 3 false, 4 greater than 3 yes true. कोई भी comparison operator, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, executed element wise. Okay, maybe print, we write in this way. NP b equal to np dot array one two three four, maybe 5 comma 6. We create another NumPy array. Okay, students, 5 6, maybe 7 comma 8. Now print A, then print now print B. Now we write print. Realize the scenario. If we write print A plus B, then also it will execute. What is A? Let's see. A is this, B is this, isn't it? Or you can write in this way also. Execute the program.
What is the A numpy array elements? देखो 1, 2, 3, 4. What are the B numpy array elements? 5, 6, 7, 8. When we write A plus B, how to execute the operation? देखो element wise. 1 plus 5, that is 6. 2 plus 6, that is 8. 3 plus 7, that is 10. 4 plus 8, that is 12. So in this way, we can add, subtract, multiply any number of array, any number of array or matrix. Just wait. जैसा हम लोग यहाँ 2 numpy array ऐड किए हैं, ऐसा 3, 4 एनी नंबर ऑफ numpy array ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा? एलिमेंट वाइज. But if we want to calculate matrix multiplication operation, matrix, at that time, for calculating the matrix multiplication, NumPy provides us function also, like that. Print matrix operation. Okay. Print, I want to print A. Then print now print B. Print B. Now write print to check the output. आउटपुट चेक करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, लेकिन जब प्रोग्राम करेगा ऐसा लिखने का कोई जरूरी नहीं है. प्रिंट देखो क्या लिख रहा हूं, A dot function B. Check the output, execute the program, check the output. देखो matrix operation. Then we print A, means A is this numpy array. Print B, B is this numpy array. Now when we write A dot is a function, B, at that time it will execute matrix multiplication. What is the rules of matrix multiplication? I think all of you know that. Row column, execute the operation row column wise. Row column wise means देखो first matrix देखो A dot B, so A का first row 1 और B का देखो first column 1 into 5 plus 2 into 7, तो मतलब 5 plus 14, that is 19. Same way देखो 1 into 6, second column, row column wise 1 into 6 plus 2 into 8, so 6 plus 16 means 22. Same way, second row column wise 3 into 5 15 plus 4 into 7 15 plus 28, 4 into 7 matlab 28, that is 43. Same way 3 into 6 18 plus 4 into 8 32, 18 plus 32 50. So for calculating the matrix multiplication or matrix operation, this function is also provided by NumPy. सबको समझ में आया? Anyone, any doubts, any questions? Huge number of built-in functions are available in NumPy. सबको समझ में आया? Reply me, students. Or if anyone any question, raise your question or unmute your mic and ask me the question also.
अच्छा, thank you Priya, Richa, Deepika, very good. Swapnil, अच्छा. Now, and remember one thing, students, a NumPy provides us different built-in mathematical function also. Like, if we write print, maybe you want to calculate the square root of any value. np dot sqrt, different built-in functions are available, maybe 289. Check the last output, execute the program and check the last output. You can calculate print np dot squares, spelling mistake, square of 5 function is also available, 25 last output. So different sine value, cos value, sine function, cos function, tan function, all the functions are available in NumPy. Mathematical function related with number system. Okay. So if anyone want to working with mathematics using NumPy, obviously it also possible. Now we create another program. Import NumPy as NP. Let's see, we create a NumPy array. A equal to np dot array array, same thing, maybe 11, 22, 33, 44. If we want to calculate the sum of all the elements in the NumPy array, check the NumPy array. I think all of you know that. Save the program. NumPy underscore example 3. I think all of you guess it. What will be the output? Now, if you want to calculate the sum of all the elements in the NumPy array, how to do that? Print sum equal to. Now, if we write in this way, a dot sum function, it will calculate the sum of all the elements in the NumPy array. Sum is a built-in function. In the same way, maximum element, minimum element, like this. In case of maximum, max, the function name is max. Mean function is also available. If we want to calculate the average of all the elements in the NumPy array, for calculating the average, there is a built-in function, mean. Calculate the average of all the elements available in NumPy array. And remember one thing, students, NumPy provides us another functionality. Check that. Suppose we write print, check the output at first. पहले output check कीजिए क्या हो रहा है. A dot sum, क्या पैरामीटर दे रहा हूं देखो, axis equal to 0. Now check the last output. The sum result equal to 4466. Why? When we pass the parameter the axis equal to 0, 0th axis, मतलब column wise, it will calculate the sum column wise in the matrix. देखो 1 plus 33 44, 2 plus 44 66.
In case of max min, ये जो max min फंक्शन है यहाँ भी ऐसा x is equal to 0 पास कर सकता है. And if we write print some result maybe 2 अच्छा a dot sum जब हम लोग ऐसा लिख रहा हूँ x is equal to 1, now check the last output. देखो 33 77. Why? When we pass x is equal to 1, at that time it will calculate the sum row wise. So column wise sum, row wise sum in the matrix is also possible in this way. देखो 1 plus 22 33. 33 plus 44 that is 77. Very interesting. So all the functionalities are provided by NumPy and very important for aptitude test. Some of the companies like Infosys, Cognizant, they set their question, MCQ question related with that topics. अच्छा. Anyone, any question, any doubts? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? Very good. अच्छा, next, don't think that only using array function we create a NumPy array. For creating a NumPy array, NumPy module provides us different functions like arange. In the previous class, we are working with range function, and NumPy provides us another built-in function. The function name is arange, not range. Arange. Okay. Let's see. We create another new program. Import NumPy as NP. Arange is a built-in function. We pass a parameter 12. Arange is a built-in function which will create a NumPy array with 12 number of elements. 12 elements. मतलब जो NumPy array create करेगा इसमें 12 elements होगा. So we store this generated NumPy array in the variable maybe p. Now print p. Check the output. Save the program. Arange underscore example. Now execute the program and check the output. What is this? It will create a NumPy array. देखो, how many elements are there? देखो 12. What are the values in the NumPy array? By default, starting from 0 to 11. 0 to 11. If you count this, how many elements are there? 12 elements. And what is the dimension of this NumPy array? I think all of you got it. सबको समझ में आ रहा है कि single dimension. You can check it in this way also. Print dimension of p, comma p dot set. Like 12. So arange function create a single dimensional array with 12 elements. Now we can change
the dimension of this NumPy array P also using NumPy built-in function. There is a built-in function. Function is reshape. Change the shape or dimension of the NumPy array. How to do that? Let's see. देखो P1 एक वेरिएबल, क्या कर रहा हूं, P NumPy जो एरे है, P NumPy एरे दिस वन, ओके, इसको क्या कर रहा हूं, इसका शेप चेंज कर रहा हूं, डायमेंशन चेक कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं. तो इसमें क्या है, देखो रिसेप बोल के फंक्शन. लेकिन याद रखना चाहिए जब आप लोग रिसेप करेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी मैच्ड. नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी मैच मतलब क्या है कि देखो इफ वी रिसेप दिस 3/4 डायमेंशनल, 3/4 डायमेंशनल मतलब 3 rows 4 columns. तो 3/4 डायमेंशनल NumPy एरे क्रिएट करने के लिए कितना एलिमेंट्स जरूरी है, 12. इट शुड बी मैच. क्योंकि देखो जो P NumPy एरे है इसमें कितना एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है. तो उसको रिसेप कर सकते हैं 3/4. जब इसको 3/5 कर देंगे तो 3/5 NumPy एरे क्रिएट करने के लिए कितना एलिमेंट लगेगा, 15 एलिमेंट्स. लेकिन P में तो 15 एलिमेंट्स नहीं है, तब एरर देगा. तो ऐसा थिंक अबाउट इट, हाँ, कि 3/4 or maybe 4/3, maybe 2/6, 2 rows 6 columns, maybe 6 rows 2 columns, maybe 12 rows 1 column, maybe 1 rows 12 column. These are possible. But 3/5, 6/3 is not possible. Now we resave this. Now if we check the output, print now print P1. Check the output. देखो what is the NumPy array over here? देखो 1 row, 2 row, 3 row, like a list of list, but there is no comma, students. Huh? How many columns are there? 1, 2, 3, 4 columns are there. That is 3/4 dimensional NumPy array. Even you can check it in this way also. Print shape of P1, comma P1 dot shape. Execute the program and check the output. What is the shape? 3/4. What is the dimension? They got 2 dimensional. Check it in this way also. Very easy, just you have to practice, huh? Dimension of P1. तो कैसे dimension check करेंगे? Endim. Check the output. What is the dimension? They got 2 dimension. In the same way, we can reshape this in any dimensional. Maybe you want to create a 3-dimensional NumPy array from P NumPy array. P2 equal to, maybe we write P dot reshape, reshape 3, that is the dimension, 3/4/1. Now, if we print, just copy paste it. Print the P2 NumPy array, P2 shape, P2 dimension, that is maybe P2, that is maybe P2. Check the output. It will create, देखो what is P2, देखो print P2. तो क्या print किए हैं, ये NumPy array 3-dimensional. तो 3-dimensional चेक कैसे करेंगे, देखो ये open, sorry, ये
ये open and this is closed. देखो ये open, this is closed. Inside this, how many lists are there? This is open and close. One, this one, open close one, open close two, open close three. So 3. Then inside this, how many lists are there? देखो 1, 2, 3, 4. हर एक लिस्ट के अंदर देखो 4 करके लिस्ट है. यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है. So 3/4. और हर एक लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है? देखो एक ही एलिमेंट है. So dimension is 3/4/1. That is 3-dimensional. लेकिन याद रखना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी मैच. 3 into 4 into 1. कितना एलिमेंट जरूरी है? 12 एलिमेंट्स जरूरी है. So in this way, using NumPy, we create any dimensional NumPy array. सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना इसको. हाँ, इसमें डाउट हो रहा ना, इसमें डाउट हो रहा ना. यस सर. कैसे 3/4/1 हो रहा है? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ. एक सेकंड. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसा करके एरे दे देगा और बोलेगा कि टेल मी द डायमेंशन, calculate the dimension of the NumPy array. Just wait. I want to change the size. तो देखो यहाँ जो NumPy array है, just I want to arrange this. MCQ में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा एरे को ऐसा अरेंज करके नहीं देगा, साइड बाय साइड लिख के दे देगा. लेकिन आपको चेक करना है कि विदाउट राइटिंग एनी प्रोग्राम, क्योंकि आप लोगों को तो पता है एप्टीट्यूड में तो कोई प्रोग्राम प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा. कोडिंग कंपटीशन में प्रोग्राम प्लेटफॉर्म मिलता है. तो मैं भी actually it is a list of list. Think in this way. देखो जो starting curly brace, which one is starting curly brace? This one. And what is the end curly brace? End square bracket? This is end. Actually this is a NumPy array, total NumPy array. ये जो total NumPy array है, total NumPy array में देखो कितना लिस्ट है. ग्रीन काला देके मार्क कर रहा हूँ. ये एक लिस्ट, ओके, स्टार्टिंग एंडिंग. और एक लिस्ट स्टार्टिंग एंडिंग. और एक लिस्ट स्टार्टिंग. इन दिस वे यू हैव टू इवैल्यूएट दिस. स्टार्टिंग एंडिंग. तो कितना एलिमेंट आया है लिस्ट के अंदर? देखो 3 एलिमेंट्स. तो 3 जो लिस्ट है, ये लिस्ट के अंदर कितना लिस्ट है? देखो 1, 2, हर एक लिस्ट में 1, 2, 3, 4. तो ऐसा देखो हर एक लिस्ट में जो 2 ओपन एंड क्लोज ग्रीन कलर का जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें कितना कितना करके लिस्ट है? देखो 4 करके लिस्ट है. इसमें भी 4, इसमें भी 4. तो क्या आ गया? 3/4. लेकिन इसमें जो 4 लिस्ट है, इसमें कितना करके एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है. सब में एक लिस्ट में देखो एक करके एलिमेंट है. तो मतलब 3/4/1. Now got it? Everyone got it? Means scenario is like that. It is a 3-dimensional array. How to represent 3-dimensional array in this way? It dimensions first 3 rows. हर एक में 4 करके एलिमेंट है.
4 करके एलिमेंट मतलब देखो इसमें ऐसा एक है, इसमें ऐसा एक है, इसमें ऐसा एक है, क्योंकि 3 डायमेंशन तो मैट्रिक्स जैसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 4 3 4 3 4 और हर एक सेल में कितना करके वैल्यूज है, इसमें एक वैल्यू है, इसमें एक वैल्यू है, इसमें एक वैल्यू है, इसमें एक वैल्यू, सब में इसमें एक वैल्यू स्टोर है। 2 होगा तो 3/4/2 हेलो हाँ देखो हर एक सेल में एक एक करके in the same way you can check it in, so maybe I want to write in this way. Okay, another example. Rent maybe H equal to np dot arange 24, then print H. So it will create a numpy array like this, 0 to 23, 0 to 23. Okay, now H1 equal to print H1 equal to H dot receive. Because there are 20 elements, maybe we want to create a 3-dimensional array, 3/4/2. कितने elements required है? 3 into 4 12 into 2 24 elements. Match with the H, so we can receive this. Now print H1. Check the output. देखो 1, okay, 2, 3. So 3 हर एक लिस्ट में कितना करके लिस्ट है? 1 2 3 4, हर एक में देखो मतलब 3/4, और हर एक लिस्ट में कितना करके एलिमेंट है? 2 2 करके, देखो 2 2. So what is the dimension of this numpy array? 3/4/2. अभी सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? किशोर समझ में आया? Okay. Or anyone any doubts about the dimension? So in this way we can create n-dimensional numpy array, and we use arange function in different way also. Let's see, we create another program. Okay. Import numpy as np. A equal to np dot arange. Sorry, spelling mistake. Arange. The start value and maybe the stop value is this. In the previous example, we pass only a single parameter 12. It will create a numpy array with 12 elements. But now np.arange, there are 2 parameters. Arange function में कितना parameters है? 2 parameters. तो ये जो numpy array create करेगा, check it.
print A, save the program, arrange underscore example2. Now if we execute the program and check the output, देखो start value and stop value, start value 2 and stop value 15. जो stop value होगा वो available नहीं है, देखो start value available है लेकिन stop value available नहीं है. How many elements are there? Obviously you can check it using dimension or shape, but elements are created, yes. No, not n minus 1. देखो 2 से start हुआ है, not n minus 1. You can check it in this way also, len of A, क्योंकि यहाँ start value stop value है. Just wait. Size. len फंक्शन भी यूज करके डायमेंशन यूज करके चेक कर सकते. देखो मतलब start value minus stop value minus start value. There is 13 elements. In the same way, we can create a NumPy array in this way also. Print using arrange function. Therefore, what we write over here? B equal to np dot arrange. Maybe there is a start value, there is a stop value. Sorry, maybe 2. Stop value 50, maybe 20, and stop value maybe 3. Interval step. Now check the output. Print B. तो क्या आउटपुट है? देखो स्टार्ट वैल्यू 2 बट स्टेप वैल्यू इज 3. तो 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया? 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17. तो स्टेप वैल्यू यूज करके भी हम लोग NumPy array क्रिएट कर सकते. लेकिन इसमें देखो एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? जैसा अभी आप लोग बोला कि कितना एलिमेंट्स क्रिएट होगा, ये पहले से डिसाइडेड नहीं है. पहले हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. जैसा विकास बोला था कि n-1, तो बोला विकास नहीं, n-1 नहीं है. क्यों? ये एक प्रॉब्लम है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट होगा ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते. ऑब्वियसली कैलकुलेट करके कर सकते हैं. मे बी आई राइट इन दिस वे. I create a NumPy array in this way. C equal to np dot arrange start value 1, stop value 2, and step value maybe 0.003. तो देखो ये भी NumPy array क्रिएट करेगा. स्टेप वैल्यू इंटरवल प्रिंट C. तो देखो जब NumPy array क्रिएट कर रहा हूं तब आप बोल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट होगा. डिफिकल्ट. और एलिमेंट्स कैसा है? देखो स्टेप वैल्यू 0.03, तो 1 + 0.03, 1.103 + 0.03, 1.03. Step value interval, isn't it? So in this way it will create a NumPy array like that. तो पहले से हम लोग बोल नहीं सकते कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट होगा. Obviously, after creating the NumPy array, all of you say that, sir, in this way we can maintain. Obviously, you are true. लेकिन पहले से आप डिसाइड कर लिया कि विदिन दैट रेंज, जैसा 1 और 2 का अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट करना है, कि में भी आपको 100 एलिमेंट्स लगेगा. तो ये रेंज फंक्शन यूज करके करना बहुत मुश्किल है. देखो 34, तो मतलब 1 और 2 रेंज के अंदर 34 नंबर्स जनरेट कर दिए. लेकिन आपका रिक्वायर्ड है कि 100 नंबर्स जनरेट करना.
तो वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेट करके आपको स्टेप वैल्यू सेट करना चाहिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए numpy array और एक फंक्शन प्रोवाइड किया है. क्या है वो फंक्शन? जैसा देखो, और एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू प्रोग्राम. ओके, import numpy as in maybe np. There is another function, np dot linspace, not lines. Sorry, spelling mistake. Linspace, not line space. Lin, not line. Remember this. Start value, stop value. Maybe we want to generate 10 numbers. Now check the output. Print a. Save this. Linspace underscore example. If we execute this, check the output. This is our numpy array. But in case of linspace, देखो start value included and stop value is also included. And in between, how many numbers? देखो 1. How many elements are there in numpy array? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 values. So in this way, we create 100 elements, maybe 10,000 elements based on our requirement. एक है कि minimum value, एक maximum value, start value, stop value. Then number of elements. This is in case of linspace function. जो linspace function है, इसमें जो 10 है, 10 मतलब क्या है? ये number of elements, not step value or interval like arrange function. सबको समझ में आया? Anyone any doubts? तो arrange में ये प्रॉब्लम है. कभी कभी arrange फंक्शन वेरी गुड, लेकिन ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? लिनस्पेस फंक्शन यूज करके numpy array क्रिएट करना चाहिए. And remember one thing, students, maybe let's see another example. Import last example, numpy as np. Maybe a equal to np dot arrange a big numpy array. When we are working with data analysis, machine learning, we have to working with big size data. Maybe we want to generate 10,000 elements. At that time, if we display this, जब display करेंगे ये numpy array को, numpy 6, execute the program and check the output. Output कैसे दिखा रहा है? देखो only first 3 and last 3 display कर रहे हैं. But don't think that कि सिर्फ 6 elements है. Actually ये console में इतना सारा वैल्यू डिस्प्ले नहीं करता, तो इसलिए ऐसा डॉट डॉट साइन देके डिस्प्ले कर देता है. लेकिन जब आप ये वेरिएबल एक्सप्लोरर चेक करेगा, देखो 0 से स्टार्टिंग है, देखो 10,000 एलिमेंट्स है. तो याद रखना चाहिए, कभी कभी numpy array का साइज बिग साइज होगा तो फर्स्ट 3 लास्ट 3 वैल्यूज डिस्प्ले करता है. इन द सेम वे, सपोज कि ऐसा मत सोचिए कि इसमें एरर है, 10,000 एलिमेंट जनरेट नहीं हुआ. नॉट लाइक दैट. Maybe we write b equal to a dot reshape. रिसेप कर रहा हूं, देखो 10,000 एलिमेंट को 100 by 100 कर सकते हैं. तब भी जब b को प्रिंट करेंगे, प्रिंट b को जब प्रिंट करेंगे तो चेक आउटपुट. ओहो सॉरी, 10,000 अभी
तो देखो जब ऐसा 2 डायमेंशनल 100 by 100 मीन्स 100 रोज 100 कॉलम्स 2 डायमेंशनल, तो इसमें भी देखो फर्स्ट 3 रोज और हर एक रोज में देखो फर्स्ट 3 एलिमेंट, क्योंकि एक एक रो में 100 करके एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट 3 वैल्यूज एवरी रोज में, हर एक रो में फर्स्ट 3 वैल्यूज लास्ट 3 वैल्यूज, और जो NumPy एरे है उसमें देखो फर्स्ट 3 रोज एंड लास्ट 3 रोज डिस्प्ले कर रहा है। बट डोंट थिंक दैट कि NumPy is not created properly, no, NumPy is created, all the things are available, जब डिस्प्ले कर रहे हैं ऐसा फॉर्मेट में वो डिस्प्ले कर रहा है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? एनीवन एनी डाउट्स? अच्छा, हाउ क्रिएट लिस्ट ऑफ रैंडम एरे। अच्छा, बाद में रैंडम फंक्शन में डिस्कस करेंगे नितेश, डोंट वरी। रैंडम इज देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन रैंडम, हाँ, रैंडम फंक्शन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज NumPy एरे समझ में आया स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. NumPy में ही रैंडम, नितेश NumPy में भी रैंडम फंक्शन है और पाइथन में भी रैंडम फंक्शन है। पाइथन में मैथ बोल के एक मॉड्यूल है, वहाँ रैंडम फंक्शन है, वो यूज करके रैंडम नंबर लिस्ट जनरेट कर सकता है, बाद में दिखा देंगे, डोंट वरी। डिफरेंट टॉपिक है, लिस्ट ऑफ रैंडम है। अच्छा, सबको अच्छा से क्लियर हुआ आइडिया व्हाट इज NumPy, हाउ टू क्रिएट NumPy एरे, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू n dimensional array, reshape this, okay। और नितेश हमको पूछा कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑफ रैंडम एरे, मतलब रैंडमली रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, जो एलिमेंट्स होगा ये फिक्स्ड है, तो रैंडम नंबर करेंगे तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन है, वो यूज करके लिस्ट एनी लिस्ट ऑफ रैंडम एरे भी कर सकता है। मे भी मेरा पीपीटी एक बार, एक सेकंड, एक बार चेक कर लेता है। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। np.random फंक्शन 2/3, तो ये यूज करके देखो np.random एक NumPy में भी एक क्लास है रैंडम, उसमें रैंडम फंक्शन है 2/3, तो इसलिए ये जब करेंगे देखो 2/3 डायमेंशन, तो क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर देखे जनरेट, कुछ ये स्टार्टिंग वैल्यू स्टॉप वैल्यू नहीं है, रैंडम नंबर जनरेट कर। तो इन दिस वे नितिश, इन दिस वे we can create a NumPy array with मतलब list of NumPy random values. In this way we create a NumPy array also. Is it clear to all? कि जो एलिमेंट है वो फिक्स नहीं है, रैंडमली जनरेट करेगा, random.random फंक्शन। अच्छा, और एनीवन एनी डाउट्स? नितिश समझ में आया? अच्छा, ओके, so thank you all. Today here we conclude our session. We meet again on tomorrow at same time. Okay, thank you all. अच्छा से प्रैक्टिस करो सब लोग, हाँ, तो अच्छा हो जाएगा पेपर।